नमस्ते। मैं आज के सेशन में आपको सबको वेलकम करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहते होंगे। स्टार्टअप शुरू करना और उसे एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना और कन्वर्ट करने में एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। इस जर्नी में आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे मिलता रहूँगा और आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम के डिस्कशन फोरम से स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए UpGrad ने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसे प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी नॉलेज मिल सकती है। आज हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग अप इन इंडिया, यानी कि वो प्रश्न है कि नहीं एक्चुअली, बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव कम इन। इट्स बीन अम्यूजिंग बिकॉज यू नॉर्मली डोंट से स्टार्टिंग अप इन Indonesia or starting up in America. But I think people feel that starting up in India has its own unique challenges. So I think many questions have come in to just figure out in which sector should I start up a venture. Now, पहले तो मैंने ये प्रश्न चुना है, ये काफ़ी broad question है, तो यहाँ मैं एक घंटे के लिए भी बात करूँगा तो I don't think I'll be able to give the answer. But I'll try and attempt it in the sector that most people feel that if you're not in the new economy business या digital business या कुछ भी app की business होगी या technology की business होगी, तो actually it's not a business worth starting, whereas actually it's quite the opposite. And I think the question I put it into this category of businesses to start up in India because it is true, ये जो Indian market है, it is a market where the kind of products and services we'll need over the next 10 साल 20 साल are going to be very different than many other parts in the world because we are a developed country in some ways, but we are a developing country in some ways, and we're slightly underdeveloped in some ways, and there's a market in all of them. दूसरी चीज़ है कि जो इंडिया है, आप सब लोग को मालूम है, ये तो क्लीशे फेज़ है कि it is a continent, it is not a country. यानी कि हर 50 किलोमीटर हर 100 किलोमीटर्स पे फैशन चेंज होती है, ज़बान चेंज होती है, डिक्शन चेंज होते हैं, जो हम खाते हैं वो भी फूड टेस्ट चेंज एंड एवरीथिंग चेंजेस. सो इफ़ यू लुक एट दिस मार्केट, इट इज़ सच अ डाइवर्स मार्केट दैट वट एवर यू आर सर्विसिंग, जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे, जो भी आप सर्विस करेंगे, अलग अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा. और ये पैन इंडिया सोल्यूशंस होते हैं ना, खाली मल्टीनेशनल्स जो लोग 20 साल 30 साल 40 साल करके आए, और ये जो प्रॉब्लम होते हैं ज़्यादा करके स्टार्टअप से आज, और आप देखते होंगे कि ज़्यादा लोग अभी शटडाउन हो गए, एक ही कारण, ये एकदम समझ सकते हैं कि हम या मुंबई में बैठेंगे या चंडीगढ़ में बैठते हैं और पूरी भारत के सोल्यूशन बिजनेस नहीं हो सकता है. इट इज़ नॉट वन मार्केट. सो आई थिंक the sectors don't need to be only in the technology. There are so many other sectors now that India needs. And that not necessarily means that if you're either that or you're a social entrepreneur. It can be a lot more in many sectors. So please go out there. Second, what is your strength? When you started to become an entrepreneur, you have not become an entrepreneur to find out, yaar, aapko kya? Many people come and ask me, what are investors looking for me to start my business? और मैं तो सोचता हूँ कि ये पागलपन की बात है, क्योंकि हाउ कैन यू आस्क सच अ क्वेश्चन लाइक दैट योरसेल्फ? बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट फॉर द नेक्स्ट 20-30 years to build your career, you are starting out to build a business for yourself or what you think an investor wants to build from you, because it won't work that way. What are your strengths? What is the problem you want to solve? What do you think you bring to the table? Next 5 years, how do you want to spend your life to build a business? Those are the important questions. और जैसे आप ये नैरो कर देंगे, I think you'll have an answer to your question. The second one is, can we do something in towns and villages in India? Most startups are only based in big cities and serving those customers. See, that is true. There are two things. It is true that the top 3 or 4 cities actually constitute 60-70% of market share in some ways. And that's good and that's bad. It's good because when you're starting up a business, you have a good concentration that when you want to get to some critical mass जो बोलते हैं, उसकी वजह से एटलीस्ट यू कैन गेट टू दैट वन लेवल कि यार, इवन इफ आई लुक फोकस ऑन 3 cities, आई कैन गेट टू समथिंग विच इज़ अ डिसेंट साइज ऑफ अ मार्केट. व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द स्मॉलर टाउन्स, देन हाउ यू अप्रोच देम, हाउ यू मार्केट टू देम, आपका मैसेजिंग क्या होगा, आपका पोजिशनिंग क्या होगा,
और आपका जो कस्टमर फीडबैक होते हैं इतना स्टैंडर्डाइज नहीं होते. एवरीथिंग इज नॉट मैगी 2-minute noodles. So if you look at it in that, you'll have to figure out what is your approach. And then when you go to rural India, वो तीसरी price point होती है. So I think there is variations in price point, there is variations in positioning and how you position a product. So let's take a classic example of shampoo. And I think many companies cracked that. So you take a shampoo and everyone thought the shampoo market will grow if you sell a bottle. Till Hindustan Levers, with a lot of research, felt that if I go to tier 2 cities and go to the villages, I'll have to start with a sachet. तो यार एक बार आप बाल धो के देखो ये sachet के साथ. You don't have to buy the whole shampoo bottle. And with that, you open up the market 10x, 20x, and 30x. Now take that example and look at it in any of your businesses and see how does that apply when you think of big city versus small city versus that. So two aspects. How are you going to position? How is your marketing strategy? Whatever else. And second, don't just go all India for the sake of going all India. You need to have a very strong expertise and an incredible team that can take you in that manner. और तीसरा question है यहाँ, India is at the cusp of a technology revolution. In your opinion, how can we leverage technology in startups in India? The whole world is at a cusp of technology revolution. I don't think it's anything to do with India specifically. So it's not a forced fit. People actually feel that technology is the changing element. Yes, but there's a lot that goes into that. At the core is also your product. With the product, what you've got now is technology as a massive enabler. ये जो problem, जो आप जो भी कुछ करने चाहते होंगे और जो भी whether it's your service or your product, technology plays a role as a strong enabler. But first you have to answer many questions before that. What is that product? What is your design? What is the need you're serving? What is the need you're going there? But it is absolutely true that almost everything today, even if you look at things like education or health or creating hospitals or medical care or tertiary care or waste management, today you can use technology before that, because most people think, yeah, collecting garbage, putting it there, aggregating that, repulverizing it and putting it there, how can there be? There's technology now even in that, because aggregating garbage, you can save cost by almost 90% if you use technology with that. So yes, technology is applicable in everything, but don't misuse and misthink that technology is only when you are in a tech product. तो ये हमारा 3 प्रश्न आज का था. अगर आपको स्टार्टअप शुरू करने के बारे क्लैरिटी चाहिए तो आप स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. ये प्रोग्राम ऑनलाइन है और पूरा फ्री है. अभी तक 20,000 लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है. इसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी लर्निंग एक स्ट्रक्चर वे में मिलेंगी. साथ में आपको इंडिया और पूरी दुनिया के हज़ारों लोगों से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे डिस्कस करने की चांस भी मिलेंगी. तो आज के लिए इतना ही है. मैं अगली बार आपसे जल्दी ही मिलूँगा फेसबुक लाइव के थ्रू, जहां आप अपने क्वेश्चंस मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. थैंक यू.